Bismillahirrahmanirrahim. I am Sar Khan, your instructor for the course titled Application of Statistics in Psychology with course code 509. This is our 29th lecture. Parameters such as mean or standard deviation are the most common way to describe a population. But there are situations in which a researcher has questions about the proportion or the relative frequencies of the distribution. And we have data in the form of proportions or in the form of frequencies rather than the scores. In such a situation, when we concerned with the frequencies of the distribution, for the distribution, we use chi-square test for the goodness of fit. Today's lecture, the contents of today's lecture are chi-square test of goodness of fit. We describe in detail what is chi-square test for goodness of fit. Then the observed frequencies and the expected frequencies, and how to calculate the expected frequencies. Then the detailed process of hypothesis testing, starting from studying the null hypothesis, which will be quite different, which we have learnt in t-test and c-test and the analysis of variance. And then locating the critical region and using the tabulated value of the chi-square test, and then calculating the expected frequencies first, and then chi-square test status, and then reaching to the conclusion. So let's start. Chi-square test of goodness of fit uses sample data to test hypothesis about the shape or the proportion of population distribution. The test determines how well the obtained sample proportions, not the scores, sample proportions, fit the population proportion specified by the null hypothesis. Actually, there are situations in which the researcher has the questions about the proportion or the relative frequencies of the distribution. For example, how does the number of the women liars compare with the number of the men in the profession, or of the two leading brands of the cola, which is preferred by most Americans or most Pakistanis, or in the past 10 years, has there been a significant change in the proportion of college students who declare a business major? If we note in all these examples, uh, the question is that about the population in the proportion. In particular, uh, we are not measuring a numerical score for each individual. Instead, the individuals are simply classified into the categories, and we want to know what the proportion of the population is in each category. In first example, uh, liars, men liars and the women liars, these two categories. In the second example, in which we ask about the brand of cola, which is preferred by the Americans, uh, there are also two categories, and the people are distributed in either of the category. And in such examples, or in such
research situations, we are concerned with the frequencies, and the population has been distributed into the categories, and how many individuals are categorized in each category. We are concerned with these frequencies of the individuals, or the number of the individuals in each category. The chi-square test for goodness of fit is specifically designed to answer this type of questions. In general terms, this chi-square test uses the proportions obtained for the sample data to test the hypothesis about the corresponding proportions in the population. So the chi-square test determines how well the obtained sample proportion fit the population proportion specified by the null hypothesis. Chi-square tests do not require assumptions about the population parameters as the parametric test. Chi-square test is a non-parametric test, nor chi-square test do the test hypothesis about the population parameters. The most obvious difference between the chi-square test and the other hypothesis tests we have considered as a t-test or ANOVA is the nature of the data. The chi-square, the data are the frequencies rather than numerical scores. We need frequencies rather than the numerical scores for each individual. We are not measuring a numerical score for each individual. Instead, the individuals are simply classified into the categories, and we want to know that the proportion of the population in each category. Chi-square test for goodness of fit uses this frequency data from the sample to test the hypothesis about the shape or the proportions of a population. Each individual in the sample is classified into one category or on the scale measurement. The data called observed frequencies simply count how many individuals from the sample are in each category. यानी chi-square goodness of fit में हम चूँकि ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसलिए एक तो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी। chi-square में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं अबाउट द शेप ऑफ द पॉपुलेशन और द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसमें हर इंडिविजुअल जो है वो एक और सिर्फ एक कैटेगरी में फॉल करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं हर कैटेगरी के अंदर, इन्हें हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ सिंपली क्या है कि हमने ये देखना है कि किस कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल्स हैं। सिर्फ हमने काउंट करना है कि किस कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर को रिकॉल करें थोड़ा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ डिफाइंड एज टेबुलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लोकेटेड इन ईच कैटेगरी ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब वहाँ पे देखेंगे जिसमें हमने बार ग्राफ बनाया था, तो उसमें एक हमने मॉड ऑफ व्हीकल नोट किया था जिसमें कार था, पैदल थे कुछ लोग कॉलेज आने के लिए। तो हमने वो हर कैटेगरी के अंदर हमने काउंट किया था कि कार पर कॉलेज आने वाले कितने लोग हैं, बस पर आने वाले कितने लोग हैं, ट्रेन पर आने वाले कितने लोग हैं। मतलब हमने हर कैटेगरी में अलग अलग लोगों को काउंट किया था सिर्फ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने chi-square में भी हर कैटेगरी में आने वाले लोगों को
इंडिविजुअल्स को काउंट करना होता है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर लाई इन ईच कैटेगरी. With the chi-square test, however, it is customary to present the scale of the measurement as a series of boxes, uh, with each box corresponding to the separate category of the on the scale. उसमें हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे उसमें हम कॉलम्स में बात करते थे कि एक कॉलम में हमने कैटेगरीज लिख देते थे और उसके सामने हमने उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखनी होती थी. या अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में भी हमने इसी तरह से पहले टेबल में हमने कैटेगरीज को फ्रीक्वेंसीज को लिख लेते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में पेस्ट करके हम जो है वो बार ग्राफ बनाते हैं. तो जबकि chi-square में ये जो फ्रीक्वेंसीज और लिखते हैं हम अलग अलग कैटेगरीज में, ये हम सीरीज ऑफ बॉक्सेस में लिखते हैं और हर बॉक्स जो है वो अलग कैटेगरी को के साथ होता है या एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. और फ्रीक्वेंसी हर कैटेगरी की कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हम नंबर की सूरत में उस बॉक्स के नीचे हम मेंशन कर देते हैं. द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कैटेगरी इज सिंपली प्रेजेंटेड एज द नंबर रिटन इनसाइड द बॉक्स. इसको हम देखते भी हैं. ये देखिए हम ये सारी पिछली लर्निंग है ये भी और ये भी. जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था तो एक कॉलम में हमने कैटेगरीज और दूसरे कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी थी. और इसी तरह से इसी को हमने अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पेश किया था तो एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसीज थी. ठीक है, लेकिन यहाँ chi-square में हमने अपने डेटा को बॉक्सेस की सूरत में लिखना है. सीरीज ऑफ बॉक्सेस हैं ये, तो हर अलग बॉक्स जो है वो उसके ऊपर उसका अलग कैटेगरी लिखी हुई है विच इज़ द कलर नेम. और हर कलर नेम के नीचे उस कलर के अंदर जितने इंडिविजुअल्स लाई करते हैं हमारे सैंपल में से वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल लिखा हुआ है. इसमें 12 लोग या 12 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, 12 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी ब्लू आई कलर है, ब्राउन कलर वाले 21 हैं, ग्रीन कलर वाले 3 हैं और अदर्स 4 हैं. तो इस तरह से हमने इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज ऑफ बॉक्सेस में. और बॉक्सेस हर बॉक्स अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और हर कैटेगरी के नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है. Notice that each individual in the sample is classified into one and only one category. Frequencies in this example represents that 4 completely separate groups of the students or individuals. 12 of them who have blue eyes and 21 of them who have brown eyes and 3 of the individuals having green eyes and the 4 having other category of the eyes of the color of the eye. Sorry. Also note that the observed frequency, these are the observed frequencies. If we add all these observed frequencies, it will represent to us the summation of the frequency. When we talk about the observed frequency, we will attach O, which is smaller than the F. Summation of observed frequency is equal to total of this M. When we add these frequencies, it is equal to 40. Then observed frequency
the total of the observed frequency or the summation of the observed frequency is equal to n, which is equal to 40. Uh, Here we are not assigning the individuals to the categories, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में करते हैं कि हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल्स हमारे पास सैम्पल के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में ख़ुद डिवाइड करते हैं। यहाँ हम जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोगों को इंडिविजुअल्स को असाइन नहीं कर रहे। इंस्टेड वी आर सिंपली measuring the individuals to determine the category in which they belong. So now we will step forward towards hypothesis testing with the chi-square. Null hypothesis for goodness of fit test. Null hypothesis specify the population proportion or the percentage that should be in each category. यानी जो नल हाइपोथेसिस है उसी की बेस पर हमने चूँकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट करनी होती है, इसे हमें बहुत ही ध्यान से हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। एक्चुअली नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई करना होता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और द परसेंटेज कितनी कितनी हर कैटेगरी में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल a hypothesis might state that 50% of all liars are men and 50% are women. तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को कुछ इस तरह से लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को भी हम इसी तरह से, जिस तरह से बॉक्सेस की सीरीज़ होती है, जिसमें जैसा कि ये लास्ट स्लाइड में हमने देखी, हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन सीरीज़ ऑफ बॉक्सेस में। तो जब हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है तो भी हमने इसी तरह से बनाना है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन में मेन एंड वेमेन ऑफ लायर्स एक जैसे हैं, यानी 50% अगर लायर्स प्रोफेशन में हम लायर्स देखें कि कितने हैं, तो हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में मेन एंड वुमेन जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, 50-50% हैं। क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में जो मेन लायर्स ज़्यादा हैं या वुमेन लायर्स ज़्यादा है। हमने हाइपोथेसाइज जो करना है वो यही करना है कि दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है जी। तो नल हाइपोथेसिस में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हर कैटेगरी में पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन या परसेंटेज कितना कितना आएगा। द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस हाइपोथेसिस इज़ टू पुट द हाइपोथेसाइज्ड प्रोपोर्शन इन द सीरीज ऑफ बॉक्सेस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हमने नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई कर देना है कि हर कैटेगरी में कितना कितना प्रोपोर्शन या कितना कितना परसेंटेज आएगा, उसको हम इसी तरह से सीरीज ऑफ बॉक्सेस में प्रेजेंट कर देते हैं। Although it is conceivable that the researcher could choose any proportion for the null hypothesis, there usually is some well-defined rationale for stating the null hypothesis. ये जो कि रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो नल हाइपोथेसिस में क्या हाइपोथेसाइज करता है अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ द कैटेगरीज, कि हर कैटेगरी में कितने कितने लोग आएंगे, इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, प्रोपोर्शन कितना होगा पॉपुलेशन का। लेकिन उसको स्पेसिफाई करने के जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जो भी रिसर्चर हाइपोथेसाइज करता है, उसके साथ एक बहुत ही वेल डिफाइंड रैशनल होना चाहिए कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को इस तरह से स्टेट क्यों किया है। ज़्यादातर हम null hypothesis often states that there is no preference among the different categories. हमारा जो null hypothesis है chi-square में ये स्पेसिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि जितनी भी कैटेगरीज से हम कंसर्न हैं, हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कोई भी कैटेगरी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि सारी कैटेगरीज जो है वो एक जैसी हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस कहता है। तो जब नल हाइपोथेसिस इस तरह से
जो है कोई प्रेफरेंस नहीं बताएगा हमें, तो हम उसे इक्वली जो भी हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे उन्हें हम इक्वली जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो इन दिस केस एच नॉट स्टेट्स दैट population is divided equally among the categories. For example, a hypothesis stating there is no preference among the three leading brands of soft drinks would specify a proportion distribution as follows. ठीक है जी, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का एक एक्स ब्रांड है, एक वाई ब्रांड है और एक जेड ब्रांड है। ठीक है, हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि हर ब्रांड में प्रेफरेंस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, चूँकि नल हाइपोथेसिस यही स्टेट करता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि पॉपुलेशन में जो कैटेगरीज के अंदर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर इज़ नो प्रेफरेंस। तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं, तो 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो प्रेफरेंसेस इन द पॉपुलेशन आर इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑब्वियसली हमारे पास इसके ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ हम कह रहे हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस, तो वहाँ हम ये कहेंगे कोई ना कोई एक कैटेगरी जो है, एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी पर कोई ना कोई प्रेफरेंस हासिल है। ठीक है, बिकॉज द नल हाइपोथेसिस फॉर द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉपुलेशन, the alternative hypothesis simply states that population distribution has different shape from that specified in H naught. If the null hypothesis states that the population is equally divided among the 3 categories, the alternative hypothesis says that the population is not divided equally. जाहिर है उसके ऑपोजिट ही होना है जो हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस को देखकर ही हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दी। Okay, now these are the observed frequencies. Hypothesized frequencies, and now we have to calculate and observed frequencies and the expected frequencies. Okay, observed frequencies वो frequencies हैं जो हमें एक डेटा के अंदर ये जो हमने कैलकुलेट किए होते हैं कि इस कैटेगरी में इतने लोग हैं, इस कैटेगरी में इतने लोग हैं, इस कैटेगरी में इतने लोग हैं। ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की मदद से और जो हमने हाइपोथेसाइज किया है प्रोपोर्शन या जो परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज, उन दोनों को मिलाकर हम उन दोनों की मदद से, उन दोनों को यूज़ करते हुए कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो मालूम कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हमारा chi-square स्टैटिस्टिक्स बेस करता है। The resulting values are called observed frequencies, and the symbol of observed frequencies is FO, O for observed. For example, we will learn it through an example. For example, the following data present observed frequencies for a sample of 40 college students. The students are classified into 3 categories based on the number of time they reported exercise each week. ठीक है जी, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज की, एक दफ़ा एक्सरसाइज की वीक में और मोर देन वंस एक्सरसाइज की। तो उन 40 में से 15 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, 19 ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने हफ्ते में एक दफ़ा एक्सरसाइज की
और 6 ने हमें रिपोर्ट किया कि उसने मोर देन वंस अ वीक। टोटल जो है ये 40 स्टूडेंट्स हैं। The observed frequencies is the number of the individual from the sample who have classified in a particular category। अभी मैंने जैसे बताया भी आपको कि वो डेटा, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हर कैटेगरी में जो कि सैम्पल में हम सैम्पल में हम क्लासिफाई करते हैं कि इस कैटेगरी में इतने लोग हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। हम कैटेगरीज में लोगों को, इंडिविजुअल्स को, सैम्पल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट खुद से नहीं करते, बल्कि कुछ सम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पर जो हर कैटेगरी में इंडिविजुअल्स अपनी उस कैटेगरी, उस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक की वजह से उसमें क्लासिफाई किया जाता है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं फ्रॉम द सैम्पल, सैम्पल से who are classified in a particular category। ठीक है, each individual is counted in one and only in one category। ये इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं हो सकता है कि हम एक इंडिविजुअल को इस कैटेगरी में भी काउंट कर लें और इस कैटेगरी में, एक दफ़ा ही उसने काउंट होना है। जबकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे डिफरेंट है। द जनरल गोल ऑफ स्पाई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज टू कंपेयर द डेटा observed frequency with the null hypothesis। The problem is to determine how well the data fit the distribution specified in null hypothesis। Hence, the name is goodness of fit। हमने ये डिटरमिन करना है कि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई की है उसमें किस तरह से फिट होता है, इसीलिए इसको हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। द प्रोपोर्शन फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस आर यूज्ड टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और जो हमारा नल हाइपोथेसिस में जो हमने प्रोपोर्शन स्पेसिफाई किए हैं इन ईच कैटेगरी, इन दोनों की मदद से हम जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस आर यूज्ड टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दैट डिस्क्राइब हाउ सैंपल वुड अपीयर इफ it were in the perfect agreement with the null hypothesis। ठीक है जी। For example, a hypothesis testing that there is no preference among the 3 leading brands of the soft drink would specify a proportion distribution as follows। if ये वो प्रोपोर्शन है जो हमने हाइपोथेसाइज किया है। इफ़ दिस हाइपोथेसिस इज करेक्ट, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द रैंडम सैंपल ऑफ n is equal to 40 individuals to be distributed among the 3 categories। एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें सैंपल डेटा में दी गई जो कि हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, एक डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्सपेक्टेड रैंडम एक्सपेक्टेड हमने इंडिविजुअल्स के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है कि किस तरह से नल जो हाइपोथेसिस हमने स्पेसिफाई किया है इसके मुताबिक कितने अच्छे तरीके से जो हमारा 40 इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग 3 कैटेगरीज। So the frequency values predicted from the null hypothesis are called expected frequencies। यानी वो frequencies जो कि null hypothesis की वैल्यू से प्रेडिक्ट की जाती हैं उनको हम expected frequency। The symbol of the expected frequency is FE and the expected frequency for each category is computed by the P and N, where P is the proportion stated in the null hypothesis and N is the number of the sample। जैसा कि पहली कैटेगरी का प्रोपोर्शन, हर कैटेगरी का प्रोपोर्शन 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो उसका मतलब है कि 1/3 into 40 would be equal to 13.33 is the
अब ये 40 कहाँ से आया, ये हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कि हमें एक सैम्पल जो है, नंबर ऑफ सैम्पल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड था इन ईच कैटेगरी, उसका जो हमें टोटल किया वो 40 था, ठीक है जी। और 1/3 हमें कहाँ से मिला, ये हमें जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कि वो किस तरह से तीनों कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 1/3 हमें वहाँ से मिला। जब हमने P इज़ फॉर प्रोपोर्शन एंड N फॉर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको जब हमने कंप्यूट किया तो ये हमारे पास 13.33 निकला। 13.33 इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच कैटेगरी। तो हमने हर दफ़ा अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी तरह से कैलकुलेट करनी है। Now, note that no preference null hypothesis, जैसे कि हर कैटेगरी में 1/3 जो है ये नो प्रेफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो नो प्रेफरेंस null hypothesis will always produce equal एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हर कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 13.33 है, ठीक है जी। ऐसा क्यों है, बिकॉज द प्रोपोर्शन आर सेम फॉर ऑल कैटेगरीज इन द नल हाइपोथेसिस। On the other hand, no difference null hypothesis typically will not produce equal value of for the expected frequencies because the hypothesized proportion typically vary from one category to the other category. जब हम सेम प्रोपोर्शन के साथ काम करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेम प्रोपोर्शन का बनाते हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द कैटेगरीज विल बी द same. Expected frequencies are calculated hypothetical values, and the numbers that are obtained may be a decimal or the fractions. The observed frequencies, on the other hand, always present a real individual and always are whole in number. जैसे कि हम इसको देखें तो ये होल नंबर में 15, 19, 6, जबकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास डेसिमल्स में भी आ सकती है। Expected frequency for each individual is the frequency value that is predicted from the proportion in the null hypothesis and the sample size. ये sample size हमें observed frequency से मिलेगा, ठीक है जी। और ये जो hypothesized proportion है for the population वो हमें null hypothesis से मिलेगा। The expected frequency defines an ideal hypothetical sample distribution that would be obtained if the sample proportion were in the perfect agreement with the proportion specified in the null hypothesis. The calculation of chi-square is same for all chi-square test. Chi-square बेशक वो गुडनेस ऑफ फिट हो, बेशक वो इंडिपेंडेंस कंटिजेंसीज का फार्मूला हो, फार्मूला सब के लिए एक जैसा है। chi-square इज इक्वल टू समेशन f ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. As the formula indicates, the value of chi-square is computed by following steps. Finding the difference between, first of all, we will calculate expected frequency for all the categories. Then finding the difference between these two, square the difference, and next divide the square difference by expected frequency, and finally taking the sum of all the categories, it will be chi-square. The first two steps determine the denominator of the chi-square statistics and should be, तो पहले
अगर हम माइनस करते हैं एफ ऑब्जर्व में से एफ एक्सपेक्टेड को, तो कोई गेट जो है हम कंप्यूटेशन में माइनस में भी कैटेगरी आ सकती है, तो उसे उसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। स्पेसिफिकली द नोमिनेटर मेजर्स हाउ मच डिफरेंस देयर इज बिटवीन द डेटा एंड द हाइपोथेसिस. The final step is also reasonable. Sorry, we add the values to obtain the total discrepancy between the data and the hypothesis. Thus, a large value of chi-square indicates that the data do not fit the hypothesis and leads us to reject the null hypothesis. However, the third step, which determines the denominator of the chi-square statistics, is not so obvious. Why must we divide the FE before we add the categories of the values? The answer to this question is that the obtained discrepancy between the observed frequency and the expected frequency is viewed as relatively large or relatively small depending upon the size of the expected frequency. This point is demonstrated in the following. So we will practically now calculate the hypothesis testing. Degree of freedom, how will we calculate the degree of freedom for the chi-square test? We will calculate the columns here. अगर इसमें 4 कॉलम्स है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 4-1 यानी कि 3 होगी, और हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें 3 कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स हैं तो ये 3-1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक रिसर्च सिचुएशन है, हम जल्दी से इसको देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस जो कि अभी हमने पीछे सीखी हैं। A psychologist examining art appreciation selected an abstract painting that had no obvious top or bottom. Hangers were placed on the painting so that it could be hung with any one of the 4 sides at the top. The painting was shown to the sample of n is equal to 50 participants, and each was asked to hang the painting in the orientation that looked correct. The following data indicated how many people choose each of the 4 sides to be placed at the top. ये एक ऐसी रिसर्च सिचुएशन है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को चूज़ किया जिस का जो बॉटम और टॉप है वो इतनी वाज़ेह नहीं थी। उसने 50 लोगों से डेटा कलेक्ट किया और उनसे ये कहा कि जिस तरह से भी जो भी तरफ आपको इसकी सही लगती है वैसे से इस हैंगर पर इस पेंटिंग को आप टांग दें। तो देखा गया कि 18 लोगों ने उसे करेक्टली टॉप अप जो है उसमें हैंग किया, जबकि बॉटम अप में 17 को, लेफ़्ट साइड अप में 7 और राइट साइड अप में 8, यानी 18 लोग थे जिन्होंने जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था पेंटर के लिहाज से, पेंटिंग के लिहाज से उसी को करेक्टली हैंग किया, जबकि 17 लोग ऐसे थे जिन्होंने नीचे वाला जो उसका हिस्सा था उसको वो सीधा लगा और उसने उसको वैसे टांग दिया। किसी को लेफ़्ट वाला सीधा लगा, किसी को राइट वाला सीधा लगा, तो वो उसी तरीके से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को नोट करके इसमें रखा गया। ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। The question for the hypothesis is whether there are any preference among the 4
possible orientation. Are any of the orientation selected more often than would be expected simply by chance? सो अगर हम नल हाइपोथेसिस, चूँकि 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4 कैटेगरीज हैं, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह से स्पेसिफाई हम करेंगे। इन जनरल पॉपुलेशन देयर इज़ नो प्रेफरेंस फॉर एनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, thus the 4 possible orientations are selected equally often and population distribution has the following proportion: 1/4, 1/4, 1/4। इसके साथ अगर हम देखें, हमने जनरल पॉपुलेशन में हमने ये कि स्पेसिफाई तो नहीं करना, मतलब ये कि हमारा alternative hypothesis is opposite to the null hypothesis in general population. One or more of the orientation is preferred over the others. तो उसी तरह से हमें अपना अल्फ़ा लेवल भी स्पेसिफाई करना है, विच इज़ 0.05, और हम 0.05 को क्रिटिकल रीजन उसका लोकेट करेंगे। तो अगर हम डी एफ कैलकुलेट करें तो 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, 4 - 1 = 3, और डी एफ हमारे पास 3 आ गया, और अल्फ़ा लेवल जो है 0.05 है। तो जब टेबल में से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये हमारा डी एफ है, ये पॉइंट, और ये हमारे पास 7.81 वैल्यू जो है हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है ऑफ काई स्क्वायर। अब हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अगर इससे कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यू को। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है, हमें इसकी 2 स्टेज हैं। द कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर इज एक्चुअली अ 2 स्टेज process. First we must compute the expected frequency from null hypothesis and then calculate the value of chi-square statistics. The null hypothesis specify that 1/4 of the proportion will be in each category, in each of the 4 categories. According to this hypothesis, we expect 1/4 of the sample to be in each category with sample of 50 individuals. So the expected frequency will be P into N, and proportion for each category is 1/4. 1/4 into 50 will be equal to 12.5. अब हमारे सब कैटेगरीज के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 12.5 है। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी है, ये सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई हैं, वो हम कैलकुलेटर लेते हैं और इसे फटाफट कैलकुलेट करते हैं। हमने 18 में से सब्ट्रैक्ट करना है 12.5, which will be equal to 5.5. Then 17 minus 12.5 which is equal to 4.5. Then 7 minus 12 12.5 equal to minus
5.5 minus 5.5. Okay, now 8 minus 12.5 equal to 4.5. अगर हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे तो ये 5.5 प्लस का और 5.5 माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हम मज़ीद कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें स्क्वायर लेना है इन चीज़ों का। इसका स्क्वायर लेते हैं 20.25, 20 पॉइंट दोनों पे 20.25 आएगा, 20.25 एंड 10.2। और इसी तरह से हम 5.5 को भी ओके, अब हम इनको इनकी जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है विच इज़ इक्वल टू 12.5, हम हर कैटेगरी को उस पर डिवाइड कर देंगे। 30.2 सॉरी 30.25 divided by FP, which is equal to 12.5. So it's 2.42. 2.42 यहाँ भी 2.42 20.25 को हमने डिवाइड करना है। अब 20.25 divided by 12.5, 1.62, 1.62, and also here 1.62. अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास समेशन, ये हमारे पास समेशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास बनेगा। और हमारा का स्क्वायर की वैल्यू की इनको हम सबको प्लस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2.42 plus 1.62 plus 2.42 plus 1.62, which is equal to 8.08. ओके, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई का स्क्वायर की। स्टेटिंग द decision, the obtained chi-square value is in the critical region
देयरफॉर एच नॉट इज़ रिजेक्टेड। मैंने पहले ही कहा था कि अगर हमारी ये जो वैल्यू है का स्क्वायर की कैलकुलेट वैल्यू अगर 7.81 से ज़्यादा होगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्चर may conclude that the four orientations are not equally likely to be preferred. Instead, there are significant differences among the four orientations, with some selected more often and other less often than would be expected by chance. ये आपके लिए एक्टिविटी है। Developmental psychologist would like to determine whether infants display any color preference. A stimulus consisting of four color patches, red, green, blue and yellow, is projected onto the ceiling above the crib. Infants are placed in the crib and one at the time, and the psychologist record how much time each infant spent looking at each of the four colors. The color that receives the most attention during the 100-second test period is identified as the preferred color for that infant. The preferred color for the sample of 80 infants are shown in the following table. The do data indicate any significant preference among the four colors. Test at 0.05 level of the significance. यानी एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है वो ये देखना चाहता है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं कलर प्रेफरेंस में उनकी कलर प्रेफरेंस को नोट करना चाहते हैं। तो उसमें एक स्टिमुलस जो कि 4 कलर्स पर मुश्तमिल था, हाँ उसे झूले के ऊपर यानी झूले की सीलिंग के साथ जो है वो लटका दिया गया और बच्चे को एक दफ़ा झूले में डाल के देखा गया कि वो उसकी प्रेफरेंस क्या है, कौन सा कलर देख और 100 सेकेंड्स के लिए उसे नोट किया गया और ये देखा गया कि 25 जो 25 जो बच्चे हैं उन्होंने रेड कलर को और 18 जो है ग्रीन कलर को और 23 जो है उन्होंने ब्लू कलर को और 14 जो है येलो कलर को। तो आपने का स्क्वायर टेस्ट ऑफ फिटनेस ऑफ फिट जो कि पूरा का पूरा मैंने भी आपको सिखाया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस जो कि 4 कैटेगरीज हैं तो 1/4 आ जाएगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसी तरह से चूँकि इसका 80 है n 80 है तो 1/4 इंटू 80 सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो उसी तरह से एक टेबल बना के आपने पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को लिखना है। फिर अगले टेबल में दोनों को माइनस करना है और उससे अगले कॉलम में आपने उसका स्क्वायर ले लेना है और उससे अगले कॉलम में हर स्क्वायर्ड जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। जब चारों कैटेगरी में आप इसको कैलकुलेट कर लें तो वो आपके पास उसको प्लस करेंगे तो वो का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो 0.05 लेवल पर 4 कैटेगरीज हैं आपके पास तो n-3 - 1 होगा 3 आ जाएगा आपके पास। तो 3 जब आ जाएगा तो वही जो मैंने कैलकुलेट किया वही आ जाएगी का स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग थी वो या 7.81 ठीक है जी। तो यही आ जाएगी। तो आपकी का स्क्वायर की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे सारे प्रोसीजर से जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो ये अगर तो आपकी वैल्यू 7.81 से बड़ी होगी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अगर छोटी होगी तो नल हाइपोथेसिस से को एक्सेप्ट कर देंगे और उसी पर आपका डिसीजन भी बेस करेगा। तो डिसीजन बिल्कुल अच्छे से बनाना है, अच्छे से लिखना है और ये आप मुझे सारी एक्टिविटीज सबमिट कराएंगे जैसे कि मैंने पहले भी कहा। जो भी क्वेश्चन जो भी क्यूरी होगी वो हम हैंडल करेंगे क्लासरूम में इंशाल्लाह।
तो ये रेफरेंसेस हैं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इन बुक्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस लेक्चर।